Thank you so much. Thank you so much. And that first is that this is an effort to just make this research as a kind of a fraternity rather. So bringing the people from the other institutes, number one, it's transforming a class into a fraternity. The researchers are a fraternity, irrespective of organization that we are in, CBM or anywhere else. Secondly, frankly speaking, that this is really something good initiative from the perspective that the students are getting to know the other insights. Even if your teacher is from the Harvard University, somehow, sometime you get bored, except for Rana Tariq. I know that he has a lot of poetry and all that. So, so, but that is generally. So really, it's a great kind of initiative, and as always, that I've seen Zabist growing in last couple of years under your leadership and your president's leadership, Dr. Mukati, and then I could see that Dr. Sara and these people have really, that moved this institute, especially the management science, toward the frontiers of what we say that crossing the barriers. So thank you so much. Thank you. Yeah. Okay, so obviously, that I'm emerging researcher. I'm also trying to learn about research. So obviously, in the process of learning, that some of the things which I would be knowing, I would try to share with you, and obviously some of the things I would learn from you. So it's not that, please just clear your mind that I'm not an expert in the research. So this is just, it's a learning journey, and I would be just sharing with you that what are my insights about research, what could be the way we do research, and maybe it could be helpful for you. May not be sometime producing impact factor, but at least doing some kind of a good research. So usually आप सब लोग जो है, this is a class of MS, what I believe that management science, and I could see that few of the very senior faculty members are sitting over there. So it's again, thank you so much for coming and honoring it. This session would be bit unorthodox in a way that there would be a lot of things which may be against the conventional wisdom of research. So please, I hope that you would listen all those things with a broader mind. Let's start the session by having a very basic insight that why do we do research? What's in your mind, that what is the primary reason a researcher undertakes research? Why do we do research? To solve the problem. To confirm some information that we think is there, but we authenticate it with evidence. To confirm some information, okay, it could be to confirm some philosophies or theories. To explore the opportunities. Fine. To find the gap. To create knowledge. Exactly. Obviously. So, अगर मैं आपने सबने बिल्कुल, I think that somehow you have touched upon one of the important facets of research. अगर मैं इसको conclude करने की, summarize करने की कोशिश करूँ तो, especially the research which we do undertake in the management science and social science, it has two major focuses. The first is that usually we do try to solve some problem, like it could be a kind of a business problem, for example, decreasing sales, we want to expand somewhere, there's a problem of the demotivation among employees, it could be the problem of turnover, or maybe the financial numbers are decreasing or somehow. So this could be the one aspect that usually once we see that there's some issue, there's a problem, so there's a kind of research over there. Other could be the opportunities those arise. For example, opportunities in terms of the digital technologies, we could see that they are, so how we can capitalize on those digital technologies. CPAC का बड़ा शोर था कि वो उसको how we could capitalize on the CPAC, तो उसके ऊपर वो CPAC को opportunity को किस तरह से किया जा सकता है. तो and broader perspective में अगर आप देखें तो in 2020 world faced this issue of that unprecedented kind of a situation of COVID-19. So again, there was a problem, and researchers came with a
solution of the vaccine. तो मैं जो हमारे जो रिसर्चर्स फ्रेटर्निटी है, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं या जो कोलीग्स होते हैं, जब मेरी उनसे डिस्कशन होती है, so I always just share with them that the researchers have been given the most important task. This task is the task of saving humanity and developing humanity. You just आप जरा चंद सेकंड के लिए सोचें कि for example अगर research, if there won't be any researchers in the world, so had we survived against COVID, या इससे भी पहले 100 साल चले जाए, तो अगर आप जो इससे पहले इस तरह के पैंडेमिक आए, उन पैंडेमिक को या इस तरह की जो भी डिजीज थी, दैट काइंड ऑफ challenges which humanity faced maybe 100 years ago, so we could not have survived that kind of challenge. In fact, humanity could not have survived if there would not have been researchers over there, number one. Secondly, whatever the progress we see in terms of the light or whatever, जो भी हमारे आसपास, these are the materialistic things, or that in the shape of the books or whatever, somehow this is connected to the researcher. So the researcher has been given a very, very important role, which is beyond the research papers or beyond a very focal thing, which we, that just, or the people assume that this just producing a research paper is a, the ultimate job of a researcher. तो मेरा तो ख्याल ये है कि researchers is a fraternity, which is a very blessed fraternity in a way that they have been given on their shoulders, come upon the responsibility to drive the human race, to develop the human race, and to create new solutions, to create new opportunities, and to help the human to to grow further. So अगर आप उस perspective में देखें, so I think that our business being a very, one component of the broader area of research, we do focus on, or ideally the research should be focused on resolving the problems of the business, or helping on to capitalize on the opportunities that which we could use in order to, move on various things, maybe our business or economy. Likewise, doing that, we could see that sometime there are the innovations in terms of product or process. We could see that there's some of the incremental innovations, some of the product innovation and all that. तो अगर मैं सबको sum up करूं, तो 2-3 लाइनों में यह है कि जो भी रिसर्च हम कर रहे होते हैं, beside the creation of knowledge, that research is aimed at least contributing to some solution of some problem, or at least it's maybe marginally helping us to tap some opportunity. At least it could be maybe incremental kind of change in some process or a product. तो अगर ये 4-5 वो चीज़ें जो कि हम हमारा broadly अगर आप देखें, तो रिसर्च के अंदर कहीं ना कहीं से कोई रिसर्च को इस पे फोकस करना चाहिए. अगर वो रिसर्च फोकस नहीं कर रही है, तो दैट्स द पॉइंट व्हाट वी विल डिस्कस. अच्छा जी, अब इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, इफ यू अलाउ मी, आई कैन जस्ट रिमूव दिस कोड. इस पूरे प्रोसेस को रिसर्च है, अगर हम थैंक यू. अब देखिए रिसर्च को अगर आप देखिए, वी कैन डिवाइड इनटू 2 things. One is the process of doing research, the other is process of writing research. The process of doing research means that actually we are getting into the field, we are collecting data, and interacting with the people, interviewing, reading literature, doing experiments, and all those lab stuff. वो आता है, that is doing research. And whatever the results we are getting, those results are in fact written in a very nice shape, in a very nice format. In order to get those published means that this is a writing research. So one is the process, the research is, you could see that it's process of doing research, and then there's the output which needs to be disseminated and which needs to be told to the people. तो एक साइड पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं, और फिर उस रिसर्च को हम लिख के इन द फॉर्म ऑफ द पेपर, रिसर्च पेपर, इन द फॉर्म ऑफ द बुक, इन फॉर्म ऑफ द maybe some professional article or something, उसको हम disseminate करने की कोशिश करते हैं.
अच्छा जी। अब ये यहाँ पे रोक, ये पूरा हैविंग दैट इन माइंड, यहाँ पे हम एक कॉमा लगाते हैं। लेट्स कम बैक टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, जरा हम उसको फोकस करते हैं। मैंने 2015 में पीएचडी की थी, एंड आई जस्ट टेक दैट एज अ रेफरेंस पॉइंट, दैट इन ऑर्डर टू सी कि क्या 2015 में, 2016 में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल लेट्स सी वी टेक द जून ऑफ 2016, और 2016 से 2022 तक नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, नंबर ऑफ पीएचडीज एंड नंबर ऑफ ग्रांट्स, अगर आप उसको देखें तो इनफैक्ट आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द डेटा बट आई कुडंट, आई हैड दैट डेटा बट आई कुडंट लोकेट that particular file. There is an exponential increase in the number of research papers, in the number of PhDs, in the number of research grants. This grants increase is bit, you know, that it's a bit flat, but the number of research papers have really exponentially increased. So much so that 2003 में we were having maybe a few hundred of research papers, maybe 500 research papers. Now they are in the thousands. I think that the number of research papers कम से कम 3-4-5 लाख, इससे भी ज़्यादा अब now we are producing. So it's a, you know, many time increase in the research paper. अच्छा, इसी तरह से let's take the same statistics for India. India में भी इसी तरह exponential increase in the research papers and all, you know, that, and even in the Sri Lanka, अगर आप South Asian region को लें, so India, Pakistan, Sri Lanka, बांग्लादेश, बाकी छोटे कंट्रीज हैं, नेपाल या मालदीव वगैरह, बट स्टिल वी कुड सी दैट देयर is an exponential increase in the number of research papers published in the various journals. अच्छा जी, अब सवाल ये है कि मैंने दो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, कि एक ये कि रिसर्च का एम क्या होना चाहिए, ये क्या है, ठीक है, रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और फिर मैंने आपके सामने रखा रिसर्च की आउटपुट को, ठीक है, हैविंग दैट ऑब्जेक्टिव इन माइंड एंड आउटपुट। तो अगर मैं ये कहता हूं कि द एम ऑफ रिसर्च इज टू ब्रिंग सम इनोवेशन, इंक्रीमेंटल, और मे बी इट कुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव काइंड ऑफ इनोवेशन, या कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, तो, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ रिसर्चेस या बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में ये आएगा कि the solution to the problems have increased, at least not if the same rate, but that's following the same rate. अगर उतने 1000 टाइम नहीं है तो could be 100 टाइम। इसी तरह से जो नंबर ऑफ इनोवेशन इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोसेसेस, अगर कोई बहुत एक्सपोनेंशियल नहीं है तो एटलीस्ट उसका कुछ ना कुछ तो वो फॉलो अप उनको वो कर रही होंगी। But unfortunately, once we look into the one of the index which is called the Global Innovation Index, which is one of the indicator of you know, the innovativeness of a nation, innovativeness in terms of producing innovative solutions to the problems, tapping opportunities, products, processes, and all that. We are hovering around. In fact, we are there at the 99th number. और अब भी ये मेरे ख्याल 2021 का या 22 का अब जो क्योंकि आया उसमें हम हमारी पोजीशन फर्दर वी हैव बीन डाउनग्रेडेड टू मे बी इट्स 100 समथिंग, उसके ऊपर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई हैव हर्ड इसकी पोजीशन हमारी और डाउन हो गई है। दिस इज द ओवरऑल, यू नो, आवर पोजीशन, एंड द सो इज नॉट, इंडिया इज आल्सो नॉट दैट गुड। अगर आप साउथ एशियन जो रीजनल बाकी कंट्रीज को देखें, सो दे हैव द सेम, यू नो, उनकी भी वही पोजीशन है जो कि हमारी है, थोड़ा बहुत, यू नो, इंडिया इज इन सम ऑफ द सेक्टर दे आर परफॉर्मिंग वेल, बट रेस्ट इन टर्म ऑफ द रिसर्च आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑलमोस्ट उनकी वही जो चीज़ है वो आ रही है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक तरफ तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है कि वी हैव टू कम अप विद द नोवेल सॉल्यूशंस, we have to come up with the, you know, that with the ways to tap the opportunities. We have a very huge responsibility on our shoulders to survive and thrive the human nation, human beings, but we are producing a lot of research and that's not doing the same thing. मतलब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि रिसर्च को ये करना चाहिए, बट जो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स जो प्रॉक्सीज है रिसर्च की वो प्रोड्यूस जो हो रही है, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट व्हाट इज इन फैक्ट, यू नो, व्हाट वी कैन से व्हाट्स द फोकस ऑफ रिसर्च। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बिफोर मूविंग ऑन,
that why that real impact of research is missing. What's the reason for that? Because I think that you are the right group of people, or you're starting your research journeys. I think that this question could not be more relevant to any other group than you. So would you please respond that from your own thinking, that what's the reason that why we're not able to uh, पहले हो सकता है कि we have attained that objectives. पहले आपकी क्या take है, और अगर हमने नहीं किए, so what is the reason that why we were not able to attain that level of objectivity and that level of precision which we were aiming initially. आपकी क्या राय है इसमें जी? Actually, we are sir missing in the link between the output and the information. जो हम find out कर रहे हैं कि this is actually the contribution of society of that. Actually, अगर हम बोलेंगे हम as a industrial application है, but we जो output आया, we are not actually the linking that. हम उसको जाके implement नहीं कर रहे हैं. हमारी processing बहुत ज़्यादा हो गई है. There is a difference in implication and the process. जी Sir, I think in terms of Pakistan, Pakistan is looking for shortcuts. Even while researching, there are a lot of shortcuts available out there which most Pakistanis use. For example, while doing a survey, we try to, remind our efforts, and instead of taking real surveys from people out there, we try to fill it upon our own. So maybe that is the reason why the impact is missing in Pakistan researches. Okay, so जी I would like to correct her point. So here in Pakistan, we can see that our academics play a vital role in making social science. Here in Pakistan, we are not academically strong enough to go and do research, despite of the fact that Pakistan is actually, allocating some of the good amount in education, but they have only few schools, business schools, or maybe social schools who are actually making social science. I was reading some kind of column some days before, and it was actually highlighting a business school which is actually creating social science. So the seriousness is not there. So the educational level is not there. So the support is not there. So people, actually the students like me, like us, we all want the good and strong academics. But unfortunately here in Pakistan, we are not that strong in our academics. It is not something which we were taught from our childhood, and we actually try to do that, but we do not have that strong base of how we should go about that. It's a strong academic base. It's a absence of the critical thinking. It's an absence of the teaching methodology which promotes the critical thinking and integrity. The technology and this education stuff goes side by side parallel. Okay, great. So fine, point well taken जी. आपने let me just summarize जो तीन लोग आपने ये कहा कि the research is there, but that research is not being implemented or adopted by the industry. This is your point. और आपका क्या point था? I just forgot. Sir, I said that Pakistan is looking for shortcuts and does not go about it the right way. Okay, so could be an issue of the integrity. We go for the shortcut, and you are saying that the absence of the sound academic infrastructure, soft and hard infrastructure. जी. I think that even though there is a disconnect between industry and academia, research is isolated in Pakistan, what I feel. When you visit in the corporate, they have their incubation centers developed within their facilities. Only few multinationals have these facilities. But when we go for a local industry or local business, we see people do not give that much importance to research. They think that is an expense. Till we have this mentality that we should not innovate or we should not create something new or something innovative, we would not get results from our people who are think tanks or maybe have some ability. But they ultimately need some encouragement in terms of buying their work, or maybe being given the proper reward or attention to the work they are doing. If it is encouraged through some monetary backup, plus the industry is giving significance to that particular area, I think there would be more people who are least interested to go into research or put into effort, because they believe that would be wasted. And if they get acknowledged, we don't have a society which encourages
So your point is that because of the lack of interest from the industry side, the researchers are not enough motivated to undertake the research which could be instrumental in helping or overcoming the industry problems. Okay, let's discuss this, but you know that in this class I'm just going to put this point aside and I will be discussing something else, but it's important to first discuss this point, that what kind of the support we are expecting from the industry and what industry can do for promoting research and what they are not doing. Ji. Sir, actually, multiple reasons behind the major factor is interest. Interest. If some researcher has some interest area of interest, so he don't get the chance to do research on the same field or same interest. Ultimately, he has to go beyond his interest. जी Ultimately, the result ये आता है कि वो फिर then total पूरा कर रहा होता है, like he has to just complete his research despite this कि इसका interest है या नहीं. I think more importantly researcher का interest होना या scholar का interest होना उस research में involve होना बहुत जरूरी है. तो वो disconnect होता है अपने interest और जो research कर रहा होता है. इसलिए जो उसका impact जो है वो उस तरह नहीं पड़ रहा होगा जिस तरह it should be. आप ये कह रहे हैं कि the researchers interest in the research और द इंडस्ट्री. चले लेट्स अभी तो रिसर्चर को मैं, क्योंकि फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट जो भी मेरे पास टाइम होगा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, यू नो दैट द रीजन इज व्हाट माय पॉइंट इज दैट फर्स्ट वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर. तो मैं उस पर बात करूंगा, पूरा मेरा सेशन उसी के ऊपर है कि रिसर्चर को क्या करना चाहिए और कैसे हम अच्छी रिसर्च कर सकते हैं. बट लेट्स फर्स्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस कि इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, व्हाट इंडस्ट्री कुड हैव डन और व्हाट एटलीस्ट एज अ रिसर्चर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू प्रमोट द रिसर्च. जी. I have a comment and as well as a question जी. from that comment. The comment is that if research is about solving the problem, so we as a country are growing in terms of creating the ecosystem for the startups, which are in itself solving the social problems. So if we are growing in that space, and if that solution is just in implementation and has not been documented as a research, so is it fair to say that the real impact is missing? Because let's consider EdLib. EdLib solved a social problem. So that was a solution to a problem, but that was not documented as a research. So this was the comment, and the question is that, am I thinking in the right direction that solving the problem or having a startup space and documenting that as a research paper? So is there any connection between the two? Yeah. First, what about your comment? You talk about that maybe airlift and that those kind of startups are going to help overcome the poverty and employment issues. Obviously, yes, but they're not researcher. That's the point. They're entrepreneurs. So the entrepreneurs, in fact, they complain that, for example, if one entrepreneur is thinking from the perspective of having that kind of innovative idea, why not a researcher can think about that? The researchers could have provided those ideas. The researchers could have provided some solution to stop various startups to not being dissolved or not to be bankrupt or something, that. So number one, right? So obviously documentation, who is documenting the research? That's the researcher. अब आप जो बात कर रहे हैं कि about the startups ecosystem in the Pakistan, so that is being just look into that who are developing the startup ecosystems, who are coming into the startups. I think that maybe 1% of them are the researchers. So the point is that it's what I'm saying, that it's a kind of introspection, that we as a researcher have to think that whatever we're producing, that's creating some impact, or at least if it's not solving the problem, at least it's offering some solution to the problem. Now obviously this is up to the people, those who want to resolve their problems, that whether they adopt that solution or not, but at least whatever we are producing in terms of research, is that capable of resolving problems or helping to tap the opportunities or not? So that's the big question. So the answer is somehow based on the data that no, obviously not. Whatever we are producing, it's not
contributing in overcoming, that a lot of societal issues, business issues are, opportunities. और अब हम बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा. एक पॉइंट था कि इंडस्ट्री का, बिल्कुल आपने सही कहा, एंड इसके बाद हम आगे मूव करेंगे कि इंडस्ट्री इंटरेस्टेड नहीं है. फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन इंटरव्यूइंग मनी ऑफ द टेक्सटाइल ओनर्स. वो जो टेक्सटाइल के लोग आज से 70 साल पहले जो उनकी बहुत सारे उनकी जो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करते थे, टुडे दे आर एक्सपोर्टिंग द सेम थिंग. उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, उनके ऑलमोस्ट प्रोसेसेस भी सेम है, सब चीज़ें सेम है. बल्कि रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट बता रहे थे कि ही इज़ वर्किंग इन अ कंपनी कॉट समथिंग, मुझे उनका नाम भूल गया. दैट सब्सिडरी इज इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड इवन यूरोप एंड अमेरिका. जो पाकिस्तान में कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसकी जो सब्सिडरी, दैट्स क्वाइट लूज इन अ वे दैट लोकल जो ओनर्स हैं वो उसको चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें, इनोवेशन सब वही ड्राइव करते हैं. सो वो जो प्रोडक्ट आज से 70 साल पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, आज भी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं. जबकि अमेरिका के अंदर ये वो कंपनी थी जिसने जो एस्ट्रोनॉट जब चांद पे गए तो नील आर्मस्ट्रांग ने जो पहना हुआ था, जो भी वो ड्रेस था उसका, उसके जो वो धागा था, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय दैट कंपनी, एंड नाउ दे हैव मूव्ड सो मच अहेड. तो एक ही कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी पाकिस्तान में है, जो कि देयर इज अ काइंड ऑफ थ्रू डिटैचमेंट स्ट्रेटजी दे हैव गिवन द फ्रीडम टू द लोकल मैनेजमेंट कि आप इनोवेशन सारी चीजें खुद देखें. और उसकी एक यूनिट है जो कि यूएस में, दे हैव डन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दे हैव मूव्ड द प्रोडक्ट फ्रंटियर सो मच. और यहाँ पर वही प्रोडक्ट हम जो 70 साल, सो दैट शोज द लैक ऑफ इंटरेस्ट एट द पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री. सो ऑब्वियसली दैट्स देयर, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. Let's forget that what industry is thinking about. Let's first have the introspection that why our research is not having, it's not creating impact. Let's see, for example, अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं कर रही तो नहीं कर रही, but we are doing a lot of international research. Maybe our research could have captivated the attention of some international players, but why not? So यहाँ पे मैं आपके सामने ये एक स्केल रख रहा हूँ, and then we'll discuss that. जैसे मैंने आपको बताया कि the two ways, one is doing research, means actually getting into the field. वो सारा आपने मतलब लिटरेचर पढ़ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग यू डूइंग, दैट इज द प्रोसेस. ये एक मैं वो फील्ड रिसर्च की बात कर रहा हूँ, या आप लैब के अंदर यू आर एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट चीजों को, आप उसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ऑल दैट. अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत अच्छा करने के बावजूद भी, इफ यू आर नॉट पुटिंग दैट research which you have done in a very cosmetical and real format of the research paper, you will not be able to present that research, and you will not be able to get that research published in a reputable journal, and eventually all of the research efforts would be failed, because at least the research which we at academia we are doing, we have to publish that research somewhere in a very reputable journal. So अगर मैंने research कर ली, सारी चीजें मैंने बड़े अच्छे तरीके से की, मैं लोगों से भी मिला, एंड दिस इज, बिलीव मी दैट आई हैव सीन मैनी टाइम, एटलीस्ट मैं ये मेरे साथ बहुत सारे कुछ जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव डन वंडरफुल जॉब. मतलब इंटरव्यूज करके 6-6 घंटे बैठ के ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं. अब जब करके उनके पास वो सारा स्टफ आ गया, दे हैव नॉलेज एंड एवरीथिंग, बट समहाउ दे वर नॉट able to pack that material or convert that all that research which they did into the format which was required to get the things published. They were not able to publish their paper into a very reputable journals. Whereas I know the people, they don't even know that how to do research. This is, I am saying with very responsibility, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर पता नहीं जा रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ. They don't know, there are a lot of people who even don't know how to do research, but they know how to write research. They write in the format which is required and accepted by the journal, and they have much more journal publications as compared to those who know that how to do research, but they don't know how to write research. So
I always tell to my obviously students and fraternity and colleagues that the problem is here. This is the in fact the problem. The problem is that I don't know that what could be done, but we are preferring those who can write research in the good format and can get published. Now the question that whether they have done actual research or not, that doesn't matter, and that's where this our academics comes. You know why? Because अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, वो डेट थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि रेमडेसिवियर या देयर वाज सम मेडिसिन, अगर आप वो मेडिसिन लेंगे तो कोविड दैट्स वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट सम कोविड, यू नो कोविड के अगेंस्ट वो बड़ी इफेक्टिव थी, उसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव थे. And he referred to the one of the article. He said that recently one article has been published in the Lancet, very prominent famous research journal, and that research article claims that XYZ medicine, I don't know what exactly, perhaps it was remdesivir or some medicine, that if you use that medicine it will help you protect against COVID. And after that statement, that medicine was in fact absent from the market. You know, uski shortage ho gayi, and it was obviously the windfall profit would have been made by the producer of that active material. अच्छा, जब ये हुआ तो a lot of investigating agencies और जो scientists उन्होंने कहा यार what is behind that medicine, देखें तो सही हमें क्या है. So they went to read that research article. And उस रिसर्च आर्टिकल में क्लेम ये किया गया था कि we examined around 60,000 or 65,000 or 63,000 patients across the globe. And interestingly, this we were watching on CNN, me and Rana Tariq were sitting there in the COVID, you know that situation, and this is live. We were watching the discussion on the CNN. So they investigated, and the report came that that Lancet article, they in fact interviewed 63,000 patients across the US. और ये वैसे by the way, the Lancet is the same journal जिसको इमरान खान भी अक्सर रेफर कर रहे होते हैं, हमारा सेहत कार्ड का जो है वो उसी के अंदर पब्लिश हुआ. It's a very reputable journal having impact factor I think 100 plus or something like 100 or 200 impact factor. Okay. अब जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि वो जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, उन्होंने शायद 600 लोगों में भी इंटरव्यूज नहीं किए थे पेशेंट्स के. और वो ऑथर्स कौन थे वो हमारे लिए दैट वाज a kind of embarrassing for us that those were from the Indian origin. They, you know, people call it the South Asian origin. They don't claim that we are Pakistani Indian. वो ये कहते हैं कि Indian origin. They were obviously from India. All of the professors were from the Indian origin. And you can imagine that मैंने शुरू में क्या कहा कि we have been given the responsibility to safeguard the humanity. The researchers का तो ये रोल है. और उन्होंने क्या किया अल्लाह के बंदों ने कि दे जस्ट डेटा को फज किया, मैनिपुलेट किया और ये कह के कि हमने 63 या सर्टेन अमाउंट ऑफ पेशेंट्स हमने उसके इंटरव्यूज किए, उसके वो एंड वेरी नाइस रिजल्ट, सिग्निफिकेंट वैल्यूज एंड दिस एंड दैट, जैसे वो करके एंड दे प्रेजेंटेड कि ये सिग्निफिकेंट आ रहा है, इसके ये रिजल्ट से ये एंड उसको कर दिया, जर्नल ने पब्लिश कर लिया. वाई? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के अंदर वो ये समझते हैं कि अगर आपने अच्छा लिखा है तो डेफिनेटली आपने अच्छा काम किया होगा. आप ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? दे कैन नॉट इवन इमेजिन. एंड दैट यू नो दैट अ पर्सन हैजंट इंटरव्यूड 600 पीपल और वो 63,000 पेशेंट्स का इन 1000 पेशेंट आप वो लिख रहे हैं उसके ऊपर. अच्छा, फिर ऑब्वियसली वो अभी भी अगर आप जाएंगे वेबसाइट में, वो आर्टिकल ने रीट्रैक किया, दोस प्रोफेसर वर बैंड, आई डोंट नो कि उनके साथ क्या हुआ. लेकिन क्या इस लेसन क्या हम ड्रॉ से कर सकते हैं? दैट दे वर एबल टू मैनिपुलेट द डेटा, दे वर एबल टू पुट वेरी नाइस रिजल्ट्स, दे वर एबल टू कन्विंसिंगली आर्ग्यू दैट दिस मेडिसिन कैन overcome the negative effects of COVID, and they got the research published. So it means that if you know writing research, that sometimes that's going to outweigh your ability to doing research, which is wrong.
obviously it's wrong. So, and that's the problem, that most of us, especially मैंने वो जो 2016 से लेके 2022 में जो देखा, and I have interacted by the virtue of my administrative responsibilities, I have interviewed many of the researchers जो PhD करके आते हैं या जो पढ़ाने के लिए वो आ रहे होते हैं, तो मैंने पर्सनली ये अंदाजा लगाया, एंड दिस इज सो इज फॉर मे बी समहाउ माय ओन रिसर्च, आई कैन नॉट क्लेम दैट आई वाज आल्सो डूइंग वेरी इफेक्टिव रिसर्च, बट यू नो दैट जो जितने भी हम लोग आए, आई डोंट नो इट्स अ काइंड ऑफ नेचर ऑफ द बीस्ट और व्हाट, कि उन तमाम लोगों का जो फोकस होता था, दैट फोकस वाज राइटिंग रिसर्च, के रिसर्च को लिखना है, कि यार चले मिल के रिसर्च पेपर लिखते हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि रिसर्च करते हैं और फिर लिखते हैं, ठीक है। सो वेयर एज इन्होंने बैठी यहाँ पे डॉक्टर शुमाइला, शी हैज आई थिंक पूरे पाकिस्तान में घूम के उस पर फैशन पे हमने डेटा इकट्ठा किया, शी इंटरव्यूड मैनी पता नहीं किस किस बंदे को इंटरव्यू किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी वर स्ट्रगलिंग हार्ड टू गेट द रिवीजन, वो एमरल्ड में और पता नहीं कहाँ, मुझे याद है इट टुक मैनी मंथ्स टू गेट द रिवीजन, यू नो। अगर हमने उसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया होता, so we could have gone, you know that paper we publish हो जाता है। recently there's another student, वो भी she's also lecturer, उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, रिजल्ट्स जो है वो that was a very natural data, रिजल्ट्स सही नहीं आ रहे, and you know she's again struggling hard to get her papers published, और बहुत सारी वो दूसरी चीजें, हालांकि simply at a stroke of maybe one key उसका वो पेपर पब्लिश हो सकता है, वो माइनस को प्लस कर दे बस वो पब्लिश हो जाएगा कि ये नेगेटिव। सो द पॉइंट इज दैट द फोकस हैज बीन ऑन द राइटिंग रिसर्च, इट हैज नॉट बीन ऑन द डूइंग रिसर्च। अजान के बाद हम मे बी फॉर फ्यू सेकंड वी कैन स्टॉप। ये हरगिज भी मकसद ये नहीं है कि आई एम क्रिटिसाइजिंग माई ओन फ्रेटर्निटी और पीपल, आई एम यू नो myself included in the same you know battery of people जो कि ये सारी वो कर रहे हैं, but the point is that I think that somehow हम जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें we have to correct ourselves as well, आहिस्ता आहिस्ता जब हम करते जाएंगे so then there would be you know जो research का वो impact आएगा। तो before moving forward I have a few of you know, उसके बाद आखिर में मैं भी वही काम करूंगा राइटिंग रिसर्च वाले, कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, फलाना क्या करना है, ये क्योंकि दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज दैट बिफोर गोइंग टुवर्ड राइटिंग रिसर्च द इम्पॉर्टेंट इज दैट हाउ डू यू डू योर रिसर्च, आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट कैसे कर रहे हैं, और फिर आप उसको अच्छे तरीके से लिखेंगे, सो दैट्स द रिसर्च विच इनफैक्ट ब्रिंग्स यू नो रिजल्ट, जो कि फ्रूटफुल होती है, जो कि वाकई दैट रिजल्ट्स कुड समहाउ कंट्रीब्यूट टू some of the you know societal issues or business issues or जो opportunities है उसको वो करेगी। So here I would like to hear from you that what is your view on it and what do you think about it? जी कोई आपके व्यूज इसके बारे में, what's your feedback, या कोई जी आप बताएं, ये कोई जी। So I think we somehow miss out the rigor that's required in the research. Maybe we are not putting into that much consideration on the critical aspects, or superficially touches out the surface areas, or maybe not going to details in depth. For that requires effort, like going into literature searches and especially the literature search. Yeah, absolutely right. I think it's a you know that one word rigor is missing. That's I think the key word. Yeah, जी। What I feel is that in my area of research, which is retail, for example, top quality units like aeronautics, customer service, they are all working on very advanced concepts that are not there in Pakistan. We are not even thinking about those concepts. So if I talk about research here, it will be completely different, completely very old for them. So that is the biggest challenge in my area. Yeah, exactly. You know that for that kind of, and that is challenge everywhere. For example, if you talk about the technological adoption, Farhan Saab, he has been working in the industry. He knows well that even, for example, the big companies, जो कि पाकिस्तान में large scale manufacturing companies हैं, what is their you know level of technological adoption in Pakistan? So there are you know a certain set of journals
जो कि एक्सक्लूसिवली उसी के ऊपर फोकस करते हैं. दे आर द जर्नल, फॉर एग्जांपल रीजनल जर्नल लाइक जर्नल ऑफ साउथ एशियन डेवलपमेंट, मे बी वी टॉकिंग जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च, इवन जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स. दीज आर द जर्नल्स जो कि जिनकी बेसिस के ऊपर, जिनके आर्टिकल्स के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं इन दी रिपोर्ट फॉर्मेट इंडस्ट्रीज के पास जाते हैं और इंडस्ट्रीज उससे सॉल्यूशंस ड्रॉ कर रही होती हैं. सो देयर आर जर्नल्स, मतलब वो हार्डकोर आपके एरिया में नहीं होंगे, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ द रीजनल जर्नल्स जो कि आपको यू कैन हेल्प टैप दोज काइंड ऑफ जर्नल्स. तो वो हैं जो कि उसमें हम कर सकते हैं. जी. One of the problems we have in research in Pakistan is that the universities and institutions do not provide the requisite support for research. They do not provide the resources. If I was to go out into the market, I would have to do it on my own. I would have to use my own time, and I would have to take my degree for that. It's very hard to do that. Yeah, I fully agree with you. Exactly. That's something, that is one thing exactly. वो जो multi-pronged issue के अंदर one of the major issues that academia, universities, institutions, they are not providing that conducive environment and obviously the funds and all that which can play an instrumental role. But the problem is that वो जो chicken and egg वाली situation है ना कि पहले क्या should we as a researcher wait for the industry and academia to provide the conducive environment and the industry to come in and then हमें help करे, या फिर we as a researcher has to develop that kind of research कि automatically या कम से कम वो pull in हो जाए किसी तरीके से. तो मेरा ये ख्याल है कि लुकिंग इनटू द मॉडल्स, अगर आप देखें यूरोप के मॉडल को देख लें, डेवलप्ड कंट्रीज के जितने मॉडल्स हैं, तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि अब जैसे आई एम नॉट श्योर दैट वो कौन सा साइंटिस्ट था, गलीलो था या जो भी था, वो बेचारे को एक्सपेरिमेंट वो छुप छुप के करने पड़ते थे. अगर पकड़ा जाता था तो ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था. सो हमेशा जब रिसर्च, जब सोसाइटी डेवलप होती है, बिकॉज इट्स the researchers are at the highest level of usually it's understood or there is understanding that कि जो researcher है वो highest level of critical thinking के ऊपर होता है. वो society के problems को ना सिर्फ देख रहा होता है या अपने जो उस area के problems को ना सिर्फ देख के समझ रहा होता है, बल्कि उसका that researcher is capable of pulling off some of the solution or spinning some solution to those problems. So that's why usually अगर आप वो देखें तो first we have to come forward, but obviously we cannot go very long. हमें जब if we are stepping in और एक कदम हम ले रहे हैं आगे, so obviously the institution and industry has to come along with us. So my point is that maybe हम पहले उस तरह की research करते हैं and possibly then we can get the government support, we can get the academic support, and we can get the support from the industry. So that's so बजाय इसके कि हम we wait for the academia, we wait for the industry. So this is, and obviously I fully agree with you. For example, मैंने एक कोई रिसर्च की जिसमें मैंने 6 महीने लगाए, 6 months, एंड उसके मैं अपनी फैमिली का टाइम भी उसको दिया, बैठ के पढ़ रहा हूँ, फिर डेटा इकट्ठा करना, फिर इंटरव्यूज करने, फिर ये करना वो करना, और मैंने 6 महीने लगा के या 8 महीने लगा के वो पेपर लिख के और another 6 months में उसको मैंने पब्लिश कर लिया बहुत एक अच्छे जर्नल में. What is reward to me? Except for satisfaction, nothing. मतलब मुझे कोई there is no reward. So मैं क्यों रिसर्च करूंगा? So obviously, लेकिन जब हम इन बातों को सोचना शुरू कर देंगे तो वो जो गाड़ी आगे चलेगी नहीं. So that's why first I think that we has to थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें, फिर हम then we can move on. जी. तो आप सेल्फ मोटिवेटेड और पैशनेट होंगे तो आपने कर लिया. अगर कोई भी इतना सेल्फ मोटिवेटेड और पैशनेट नहीं होता, there has to be some extra motivation जो आपको मोटिवेट करे कि हाँ ठीक है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट या कोई रेजिग्नेशन या कोई ऐसी चीज मिलेगी तो फिर कीप्स यू मोटिवेटेड. तो फिर तो सारे चंद लोग बच जाते हैं, कुछ इतने सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि बगैर किसी रेजिग्नेशन के या रेजिग्नेशन के वो जो है विद देयर ओन पैशन वो पब्लिशिंग. But my point is that चले जो आप for example if you're producing one research, आप जो है ना you're not highly motivated as a requirement of your PhD or MS degree, आप एक रिसर्च करना चाहती हैं, तो उस एक रिसर्च को आप इस प्रोसेस से गुजारें. यहाँ पे फोकस करने के बजाय फर्स्ट यू डू दिस,
और फिर इसको यहाँ से लेके आए, तो इवन हम लोग वो लोग जो कि डीमोटिवेटेड भी हैं, जो कि मतलब फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रमोशन, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इवन दिस रिसर्च वुड हैव द इम्पैक्ट अपॉन एंड ऑन द इंडस्ट्री, एंड वो जो चीज़ें हैं वो बेहतर होना इससे भी शुरू हो सकती हैं. इट्स नॉट समथिंग. तो मेरा पॉइंट ये है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं ना, जो द रिसर्च विच इज बीइंग पब्लिश्ड, दैट रिसर्च शुड कम फ्रॉम दैट इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. दैट रिसर्च जो मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा ये कहता है कि मैंने कंज्यूमर चाइल्ड बिहेवियर के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा है कि फॉर एग्जांपल बच्चे की मोबाइल यूज करते हुए क्या उसके जो है ना हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं. तो वो जो जिसने रिसर्च पेपर वो लिखा है उसको तो 100% वो दैट पर्सन शुड बी मास्टर ऑफ. उससे पूछेंगे अच्छा बच्चा अगर फॉर एग्जांपल कार्टून देख रहा है तो उसके क्या इम्पैक्ट होगा, या अगर ये बच्चा इस तरह से स्टाइल में मोबाइल यूज कर रहा है और इस तरह बैठा हुआ है तो इसकी क्या कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. सो ऑल दैट पर्सन मस्ट नो, क्योंकि वो पूरे प्रोसेस से गुजरा है ना वो बच्चे को. अब हो ये रहा है कि आई नो लॉट ऑफ पीपल, आप भी जानते होंगे हमें से कि फॉर एग्जांपल आई प्रोड्यूस्ड सम रिसर्च, लेटर ऑन आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैंने ये फॉर एग्जांपल कैसे की चाइल्ड बिहेवियर पे या फलां पे, तो मुझे पता ही नहीं है कि वो हाउ आई हैव गॉन थ्रू दैट रिसर्च. दैट्स सो अगेन द पॉइंट इज दैट 100% आप अगर नहीं तो एटलीस्ट लेट्स ट्राई दिस. वी मस्ट, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हवा में बातें होंगी. वी डोंट नो द रियलिटी. That's reason I have seen और आपने भी देखे होंगे many of the articles, industry 5.0's impact upon the performance in Pakistani, for example textile industry. So Pakistani textile industry is not aware of industry 4.0. They are just having that industry 3.0 technology. For example, तो आप 4.0 में आप सेंसर्स की और IoT की बात कर रहे हैं और 5.0 में उससे भी आगे जा रहे हैं. तो आप from where did you get the data? और आप ये भी देखेंगे कि उसके अंदर लिखा होगा कि वी सर्वेड द 300 टेक्सटाइल फर्म्स और रिजल्ट्स फाउंड के जी उसका वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था. तो मुझे समझ नहीं आती कि वो कहाँ से वो फर्म्स आ गई. एंड इन सम ऑफ द केसेस आई हैव सीन दैट वी सर्वेड फॉर एग्जांपल 500 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन कराची एंड फाउंड दिस, whereas the total pharmaceutical industry for example there are 300. तो बाकी 200 कहाँ से आ गई. सो दैट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट. तो मैं इसलिए जो हमारे रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसलिए ये पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ कि वंस यू विल बी गेटिंग इनटू द रिसर्च, एटलीस्ट करेंगे आप भी वही, मुझे पता है, आई नो एग्जैक्टली, लेकिन एटलीस्ट आपके माइंड में एक चीज होगी कि हाँ यार थोड़ा सा वो जो है ना वो आप कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे. एटलीस्ट सम ऑफ थिंग यू विल बी डूइंग, कुछ ना कुछ आप जो है ना तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर बेहतरी हो जाएगी. जी हमारी इकोनॉमी हमें एक्चुअल काम करने नहीं दे रही अगर देखा जाए तो. क्योंकि अगर हमें डेटा कलेक्ट तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री से ही करना है. अगर इंडस्ट्री से डेटा के यूज आ रहे हैं तो मेरी एमएस को 4 साल तक चली जाएगी. 2 साल तक तो मैं सिर्फ वो 1.5 साल करूंगा एंड प्रॉब्लम एक साल मेरा वो केसेस जाएगा. एंड अगर डेटा का इशू आ रहा है तो मोस्टली स्टूडेंट भागते हैं, वो इसी से भागते हैं कि 1 साल 1.5 साल का वो डेटा कलेक्शन का फेज होता है वो बहुत ही लंबा चला जाता है. तो विद ड्यू रेस्पेक्ट के अगर हम या तो हम इकोनॉमिक जो सर्कमस्टेंसेस है वो हमको इतना बेहतर कर दें कि हम क्या है डेटा कलेक्शन में कोई इशू ना है, मोस्टली जो इशू बहुत ज़्यादा आते हैं, या तो फिर ऐसा करेंगे तो वी कैन प्रोड्यूस बेटर जनरल. अदरवाइज तो स्टूडेंट्स के पास मोस्टली अगर हमारे क्लास में 99 स्टूडेंट्स हैं, 98 आर डूइंग दैट, तो एक वो भी नहीं करेगा, डिमोटिवेट हो जाएगा कि उन सब की डिग्रीज हो गई एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग के मेरे डेटा का मसला होता है राइट. लेकिन क्लास में अगर सारे सही रिसर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि सबको डेटा का मसला है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी विल लोअर डाउन द स्टैंडर्ड्स. पता है गड़बड़ कब होती है कि एक ने ऐसे कह दिया मैंने 700 टेक्सटाइल से डेटा लिया था. मुझे ये समझ नहीं आती कि दैट व्हाट डज इट मीन दैट टेकिंग डेटा फ्रॉम 700 टेक्सटाइल मिल्स. आई थिंक इट कैन टेक ईयर्स एंड ईयर्स. जो कि आप इंडस्ट्री में आप कभी 70 टेक्सटाइल से डेटा तो लेके दिखाएं जरा, फिर आपको पता चलेगा कि हाउ मच टाइम डज इट टेक. सो द प्रॉब्लम इज दैट ऑब्वियसली ये आप लोगों का नहीं, ये हम सबको दीज आर आप लोग तो ऑब्वियसली यू आर द इमर्जिंग स्कॉलर्स,
दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड एट द लेवल ऑफ, फॉर एग्जांपल आवर लेवल, जो कि बैठे हुए अगर एक डीन बैठा है, एचओडीज बैठे हैं जो कि एग्जामिनर्स हैं, दे हैव टू अंडरस्टूड, दे हैव टू अंडरस्टैंड यू नो कि भाई हाउ इट्स पॉसिबल टू टेक द डेटा फ्रॉम 300, बल्कि जो जिसका, मैं तो हमेशा यही करता हूँ जिसका कम डेटा होता है, और मैं आई अप्रिशिएट दैट पर्सन कि इसने ये जेन्युइन इकट्ठा किया होगा. दोज आर टॉकिंग अबाउट 300 डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम, फॉर एग्जांपल 500 firms from all over the Pakistan. How does it, it's not possible in that way. तो ये है, तो इंटेग्रिटी जो है ना वो थोड़ी सी अगर होगी. अब सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इफ यू हैव एनी, अगर कोई इसमें कोई चीज आप ऐड करना चाहते हैं, इफ यू हैव एनी कमेंट यू कैन गिव, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड टू जस्ट हैव समथिंग अगेन टू डिस्कस दैट एज टू हाउ वी कैन क्रिएट अ बैलेंस. जो राना साहब बात करते हैं एम्बी डेक्सटेरिटी की, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन डूइंग एंड राइटिंग रिसर्च, वो क्या हो सकता है वो जी. इज देयर एनी कमेंट और शुड आई मूव फॉरवर्ड? जी जी जी. Okay, there is one integrity side of the research, and the other side is the respondent. So we so much so even as respondents as well, we try to skip so many reading points, and we just try to go and opt for the easiest option and maybe a bit value or something. So again, that also impacts your impact factor of the research as well, because the data is from the representative sample, but the data is not representative itself. So that also does not give you those results maybe which could reflect onto the reality. So yeah, it's a respondent's biasness, obviously. So again, the things boil down to what she said, that the academic, upbringing. Maybe that if we could have developed a citizen जिसको ये पता है कि अगर मैं ये रिसर्च को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, दिस रिसर्च विल बिकम अ पार्ट ऑफ सम पब्लिश्ड पेपर, और जो जिसकी बेसिस पे पॉलिसी बनेगी तो उसको प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए. सो अगेन तो फिर हम वो ऑब्वियसली, बट यू आर राइट दैट देयर इज अ रिस्पोंडेंट्स बायसनेस इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, और हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही है जी. हम क्या उसको मिटिगेट कर सकते हैं एज अ रिसर्चर, because I see that if somebody gives me a preamble why we are doing it and whatsoever we are conducting it, it would affect this side. Maybe it would tie up my some responsibility towards some social change or something, that I would feel that if I'm trying to do the research and I should give a authentic data. So I think somehow, somewhere, if we also respond to somebody and we see there is no such rigor from the this researcher, so I will give that much consideration. Okay, it is just for the sake of like filling the paper, we do it. Yeah, formality है. But we are not given that some kind of like, it is the Google Docs पे हमारे पास आ जाते हैं. So we as researcher also have to educate our respondent as well. Yeah, obviously that this is very important. That's why self-administered questionnaires are always preferred. The reason is that you can talk to your respondents, you can tell them the importance of that research which you are undertaking, and that also is a kind of a ceremonial importance of the research, that you are going to that person to get those questions filled. So that is, in that way we can do exactly. So that's why there are a lot of studies which show that the researches which have been done through the data which has been collected through virtual sources, their results are somehow compromised. Not all, but obviously due to not some manipulation at the end of researcher, but due to the respondent's biasness. Exactly. So these are some of the things. अच्छा, अब इसमें I'm not getting too much into details, but obviously ये writing research में होता ही है कि once you're getting into the last year of your PhD, for example, तो आपको पेपर पब्लिश करना है, तो फिर somehow you have to publish. तो वो फिर आप करा के then you don't focus on doing research. आप रिजल्ट सीधे कर रहे होते हैं यूं करके, and that's a test of your integrity at that time, कि उस वक्त आप क्या करते हैं. तो बट देयर आर द मेनी रीजन जिसकी वजह से हम राइटिंग रिसर्च की तरफ जा रहे होते हैं, डूइंग पे नहीं करते. सो लेट्स लीव देम, मूव ऑन, एंड देन वी डिस्कस इसको. बल्कि मैं एक दफ़ा कंक्लूड कर लूँ, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू ऑफ द थिंग्स. तो अब हो ये रहा है कि वो जो राइटिंग रिसर्च की वजह से ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग, लैक ऑफ रेलेवेंस.
रेलेवेंस उसकी नहीं होती, वो मैंने इंडस्ट्री 5 आप देख लें। बल्कि आप इस तरह करें कि आज ही अगर आप, जब आपको टाइम मिले, आप गूगल स्कॉलर पे जाके पाकिस्तान जो कॉन्टेक्स्ट में पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, आप 10 आर्टिकल देख लीजिए, 10 में से 6 से 8 आपको उनकी रेलेवेंसी नहीं मिलेगी। इंडस्ट्री 5.0 फॉर एग्जांपल, और पता नहीं कौन कौन से बिहेवियर जो है ना वो वी टॉकिंग अबाउट, उनकी रेलेवेंस बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। सो दैट द रीजन इज दैट मे बी हमारा आवर रिसर्च इज नॉट वेल ग्राउंडेड into the context, and obviously lack of novelty is again that our research idea stems not from our own issues, our local observations, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, rather than our idea stems from and not from our reading। हमारा आइडिया कहाँ से स्टेम होता है, इंक्लूडिंग मी, कि एक बहुत अच्छा नया रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, अच्छा ये है, इसके अंदर से ये, फॉर एग्जांपल एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि मॉडर्न स्लेवरी की वजह से सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो मैंने कहा यार इट्स वेरी नाइस आर्टिकल, लेट्स टेक दिस। और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसके अंदर मैं ये कह देता हूँ कि वर्क प्लेस जो इन्वायरमेंट है उसकी नेगेटिविटी इस इम्पैक्ट को और बढ़ा देती है। सो अब मैंने क्या किया कि बैठे बैठे एक आर्टिकल आया, अब आई डोंट नो दैट व्हाट्स हैपनिंग देयर इन द कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान में मॉडर्न स्लेवरी किस तरह से है या कॉर्पोरेट स्लेवरी हाउ इट्स देयर, पाकिस्तान में सप्लाई चेन्स के बिहेवियर्स क्या है। सो सिंपली व्हाट डिड आई डू, मैंने वो एक आर्टिकल का पकड़ा कॉन्सेप्ट, उसके अंदर मैंने एक चीज ऐड कर दी। सो अब ये दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ नोवेलिटी। नोवेलिटी तो उस वक्त आएगी जब मैं या तो मैं पूरी रीडिंग करके फिर देखूं कि इसमें क्या गैप है, या फिर मैं कॉन्टेक्स्ट से प्रॉब्लम उसको वो निकाल रहा हूँ। देन ऑब्वियसली देन देयर विल बी अ लैक ऑफ सब्सटेंस, एंड दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू एंड आई ऑलवेज डिस्कस। और ये प्रॉब्लम रहेगा ना सिर्फ हमारे साथ, पूरी दुनिया में। there is a lot of fake data, and that's the reason that now the journals have asked, most of the reputable journals, they are asking for the data and they do run the data, और आपके जो रिजल्ट्स है उसको, और वो डेटा की इंटेग्रिटी को भी देख रहे होते हैं थ्रू मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर एंड एल्गोरिथम्स, कि ये कहीं खुद तो डेटा नहीं किया, उसके वेरियस पैटर्न्स को, उन तमाम चीज़ों को देख रहे हो। Because one source is giving GDP 2022 and other source is giving that. जी जी। So this is the point. प्राइमरी नाउ यू नो दैट दीज मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर इतने इंटेलिजेंट है कि वो आपके प्राइमरी डेटा भी अगर आपने खुद से उसको किया है तो उससे पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेता है। दैट्स जो एडवांस एनालिटिक्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल यू हैव फर्स्ट द डेटा, या आपने खुद से डेटा क्रिएट किया 1 1 1 2 2 3 3 4 4, तो वो उसके हिडन पैटर्न्स देख के और वो आपको बता देगा कि ये डेटा के अंदर एलिमेंट ऑफ जो है ना वो फेक डेटा का क्या कितनी परसेंटेज हो सकती है उनको। सो दिस इज देयर, एंड देन ऑब्वियसली कि जब आप वंस यू आर राइटिंग रिसर्च, यू आर नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, तो फिर आप सोफिस्टिकेशंस के ऊपर जाएंगे, मेथोडोलॉजी बैंड वैगन के, आप अच्छा इसको भी लगा लें, PLS SCM के साथ ये भी लगा लें, ARDL लगा लें, फ्लान टेस्ट। सो you bank upon the hardcore sophisticated econometrical and mathematical models in order to make your research complex and in order to make it publishable, ताकि वो जर्नल में ज़्यादा बिके, whereas that again उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं होगा। मैं आपके साथ अब एक उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, एक इन्होंने पब्लिश की थी रिसर्च, क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स इज अमंग the word 2 3 4 renowned journals। जो एक लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डीन है डॉक्टर आजम, he and his wife and there was 1 2 other person, they published one research। उन्होंने क्या किया कि वो फुटबॉल का जो क्लस्टर था, सिर्फ एक इंडस्ट्री ली, सियालकोट का फुटबॉल का क्लस्टर, वहाँ पे जो फुटबॉल को जो काटते हैं पीसेस, उनकी जो कटिंग उन्होंने देखा कि हाउ देयर क्या उसकी टेक्नोलॉजी वो कटिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो कटिंग का जो मैथ, दैट्स अ हेक्सागोन काइंड ऑफ थिंग, उसको वो कर रहे थे, जो फुटबॉल के वो जो पैचेस वो काट के बाद में उनसे बनते हैं। सो दे कुड फाइंड मैथमेटिकली कि इसको अगर हम कटिंग को थोड़ा सा चेंज करें तो उसको पर फुटबॉल पीस एटलीस्ट 50% जो वेस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। एंड देन दे वेंट ओवर देयर, उनके साथ में बात की और फिर वो टेक्नोलॉजी पूरा थोड़ा सा उसकी डाई में चेंज किया, उस तरह करके दे वर विद देम फॉर 6 months। तो उसके ऊपर उन्होंने दे रोट सिंपली दैट इनटू द पेपर, इट्स वेरी सिंपल,
and that paper has been published in the Quarterly Journal of Economics, which is the most renowned journal in the world, मतलब जो नोबेल लॉरिएट्स जिसके अंदर पब्लिश कर रहे होते हैं. सो द पॉइंट इज कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो वो उसमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये नहीं है, तो वो पब्लिश नहीं होती, वो हो जाती है. अच्छा, फर्क क्या था? द डिफरेंस वाज दैट डॉक्टर आजम and his team they did good research and they were able to write that research in a good way. तो उन्होंने रिसर्च की और अच्छी रिसर्च थी, उसको अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा and they got that published. So that's the point that you know, but it's not always true कि अगर आप कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिसर्च करेंगे तो वही पब्लिश होगी. आपने एक आम रिसर्च की, वो अगर आप उसको अच्छे तरीके से आपने राइट किया तो वो भी पब्लिश हो सकती है. Okay, so अब मैं I'm just going to share. I know that अच्छा हुआ ये मैं आपको let me share with you that primarily my undergrad is in economics, और फिर मैंने सप्लाई चेन में जॉब की, तो आई यूज्ड टू टीच सप्लाई चेन और इकोनॉमिक्स, एंड आई वाज अ काइंड ऑफ अ गुड टीचर इन द क्लास. लेकिन जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च पढ़ाना शुरू किया, सो आई टेंड टू बी बोर, इसीलिए यू कुड सी दैट आई एम अ मोर मोनोटोनस काइंड ऑफ थिंग बिकॉज द रिसर्च सीम्स टू बी मोर, ये ज्यादा एक सीरियस जॉब लगती है. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट आई वुड बी मोर मोनोटोनस एंड दैट विल नॉट बी वेरिएशन, जैसे एक वो टीचर में वो फन का एलिमेंट मिसिंग होगा. लेकिन दैट व्हाट अगेन द वेरी फेमस नेचर ऑफ द बीस्ट, क्या कर सकते हैं अब इसमें, ठीक है. तो रिसर्च का ये भी एक एलिमेंट है दैट इट चेंजेस योर पर्सनालिटी. जो लोग मुझे फॉर एग्जांपल अर्ली डेज में, जब मैंने 2007-8 में व्हेन आई वाज टीचिंग, और अब जब मैं पढ़ाता हूँ, तो वो आई फील दैट दिस बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च एंड ऑल दैट, आपका वो वाकई जो पीएचडी है वो आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती है. यू टेंड टू बी मोर सीरियस एंड ऑल दैट, तो वो उसका असर आपकी टीचिंग डिलीवरी में भी आ रहा होता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग लेट मी एडमिट दिस दैट आई हैव टर्न टू बी द वर्स्ट टीचर आफ्टर डूइंग माय पीएचडी. ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है. It's not because of the PhD, it's because that I maybe put more thinking in, more, my focus is on the thinking and writing. So perhaps there's a controdox or the paradox that if you are writing more, you're thinking more, you are less, but it's the case with me, may not be with everybody. तो मेरे साथ तो कम से कम exactly exactly. So that exactly is maybe is exceptional, but not for all, at least for me it is. So the point is that coming back to the point, तो अब वो रिसर्च का सिंपली इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आई वुड जस्ट शेयर विद यू दैट के जो वर्ल्ड के अच्छे जर्नल्स में पेपर पब्लिश होते हैं, तो उनका क्या प्रोसेस, हाउ डू डूइंग रिसर्च एंड राइटिंग रिसर्च, इसका हाउ वी कैन स्ट्राइक बैलेंस and then how we can get the things published over there. And this is something which really मैंने इसको I worked on it, और बल्कि मैं let me share with you one of the case. एक जो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, डॉक्टर मुमताज खान, इनको ये शुमाइला या ये जानते हैं इनको. he has been हम एक ग्रुप में काम करते थे. इट वाज मेरे अंडर ये पीएचडी कर रहे थे लोग, तो दे वर हर सैटरडे को हम आते थे ये मेरे पास वहाँ पे, तो वी यूज्ड टू डिस्कस आइडियाज एंड ऑल दैट. तो जब बारी आई, वो माजू से पीएचडी कर रहे, तो वहाँ पे उन्होंने वन इम्पैक्ट फैक्टर पेपर की रखी हुई थी, एक कंडीशन है फॉर गेटिंग ए पीएचडी. एंड देन ही केम टू मी, उसने कहा कि ये तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये अपने जो ये अजीब सा है पेपर का मसला है ये एंड वो एंड ऑल दैट. So then we sat and we discussed and discussed and discussed. So and then he got to know that how to do research and write research. He is a very vivid kind of reader, बहुत extensively पढ़ता है, उसकी observation बहुत अच्छी है, और to greater extent वो data भी genuine उठाता है जो वो उसका आ रहा होता है. तो उसकी वजह से एंड वेरी वेरी सिंपलिस्टिक आइडियाज रिटन ब्यूटीफुली, हैविंग फ्रॉम जो हमारे जो आमतौर पे मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं. तो 2020 में उसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर नहीं था, ये एक दो दूसरे वाई कैटेगरी पेपर थे. एंड फ्रॉम 2020 नाउ 2022 खत्म हुआ, तो मेरे ख्याल में 2.5 years
he got published around 17 research papers. Among them 9 are very high quality impact factor papers जो कि उन जर्नल्स में पब्लिश हुए जो कि प्रैक्टिकल पेपर्स को लेते हैं, लाइक यूरोपियन जर्नल ऑफ इनोवेशन, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जर्नल, जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल and all that. What was the reason? The reason is that he understood the game of having that the blend of doing research and writing in a good format. तो वो उसमें वो क्या चीजें मैं I'll just share with you कि first of all जब once you're starting your research, that's something that which I always suggest to everybody. Once you're starting your research, उसको सिर्फ एक दफा आप उसको, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग रिसर्च समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, एटलीस्ट एक दफा उसको कॉन्टेक्चुअल कंफर्मेशन या क्लैरिटी जरूर लें. मैं अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ एक सर्टेन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे, सो आई मस्ट फर्स्ट जब मैं शुरू कर रहा हूँ, चाहे मैं इनफॉर्मली करूँ, बट एटलीस्ट फर्स्ट टाइम बिफोर किकिंग ऑफ दैट रिसर्च आई मस्ट गो टू द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री आर इन टू द इंडस्ट्री, और मुझे उनसे बात करके एक दफा आइडिया को वैलिडेट आप जरूर करवा लें. सो अगर वो आइडिया वैलिडेट होगा, इट मीन दैट यू हैव लेड द फर्स्ट स्टोन इन द राइट वे. तो इसलिए मैं जब भी, या फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग सम रिसर्च, तो मैं फॉर्मली या इनफॉर्मली समहाउ जो लोग उससे रिलेटेड होते हैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ ये कैसा है. अच्छा, जैसे कि टेक्सटाइल पे कर रहे हैं तो टेक्सटाइल की कैसी एक्सपोर्ट चल रही है, किस तरह से सप्लाई चेन के क्या इश्यूज एंड ऑल दैट, सो दैट हेल्प्स यू टू वैलिडेट योर आइडिया. And sometime you will find that whatever you're thinking, that's not relevant to the context. तो वो वहीं पे filter हो जाता है. तो and that's something that one of the key of having a good research. क्योंकि अगर industry ने validate कर दिया, it means that there is a gap at least in the industry. Industry के अंदर तो gap है उसके अंदर. Then you know that you can come up with वो आगे आप उसको वो कर सकते हैं. अब मैं उसमें there are few of the other things which I would discuss, क्योंकि हम लोग जो लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर विच वी रीड, वो लिटरेचर क्या होता है कि वो लिटरेचर है जो दुनिया का कोई शख्स नहीं पढ़ता सिवाय रिसर्चर के. आपको हमें पता है ना कि रिसर्चर क्या पढ़ता है, रिसर्चर का लिटरेचर कहाँ से आता है, रिसर्च आर्टिकल से आता है ना. और रिसर्च आर्टिकल मेरे ख्याल में दुनिया का कोई शख्स, इवन कि अगर एक शख्स जेल में भी कैद है तो आप उसको रिसर्च आर्टिकल देंगे वो भी नहीं पढ़ेगा. आई डोंट वांट, दिस इज दैट्स उसकी लैंग्वेज और वो सारी चीजें इस तरह से होती हैं. इट मीन्स दैट कि समथिंग एल्स हैज आल्सो टू बी कंसल्टेड, किसी और चीज को भी देखना होगा हमें उस रिसर्च पेपर के लिटरेचर के अलावा. मुझे अगर आई जस्ट वांट टू स्किप सम ऑफ द स्लाइड्स, चले एक मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा, लेकिन एक चीज मैं चले यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ, दिस इज व्हाट आई हैव सीन दैट फॉर एग्जांपल जो ज्यादातर पेपर हैं जो प्रोमिनेंट जर्नल्स के, और मोस्ट ऑफ दोस पेपर्स आर फ्रॉम द इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च, दे आर दैट मोस्ट ऑन द पुल काइंड ऑफ रिसर्च. Pull is need that there's a need of research in the society, in the industry, तो उसके ऊपर कर रहे होते हैं. अब अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे, the countries were at the frontier of somewhere, वहाँ पे 80% 70% pull research. It means that the need of research is coming from the industry कि यार इस पे रिसर्च करनी, इस पे करें, ये करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए, मे बी the digital technologies को किस तरह से infuse करेंगे supply chain में in order to improve and all that. So that's coming from the industry somehow. So that's a pull. So जब आपकी pull research होगी तो उसका कोई use करने वाला भी होगा obviously. And the push research is more coming from, मुझे बैठे हुए कोई idea आ गया या मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या वहाँ से कोई चीज़ आ रही होती है, तो push research is the most of the time it is for the knowledge creation. जो हम मतलब मैंने बैठे बैठे अगर यहाँ पे एक मेरे जहन में कोई आइडिया आया कि इस पे मुझे कोई काम करना चाहिए, एंड देन आई एम रीडिंग लिटरेचर एंड डूइंग रिसर्च, सो दैट काइंड ऑफ रिसर्च मोस्ट ऑफ द टाइम दैट एड्स अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग्स टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज. But if there's a pull research which is coming from from the stakeholders like industry, society, people and all that, so that kind of research has a more acceptability. So I think the first lesson which we all learn is that we must try on the pull kind of research. That's why I was just saying that the idea validation is कि चले आपके जहन में एक आइडिया है बट आपने इंडस्ट्री से वैलिडेट कर लिया, तो एटलीस्ट देयर इज अ नीड
of that idea in the industry. The best thing is that जो कि I've seen for example Wharton Business School में देखें या जो बड़े बड़े business schools हैं, what they do is for the research, like let's say कि स्टार्टअप के 10 लोगों को यहाँ पे बिठा दिया. Recently even I must share with you that on 12th of December I was in LUMS. That was it was the same kind of symposium over there. They called 119 120 people. The aim was to trigger research on the battery electric vehicles, their supply chain and their charging infrastructure. Around 90 people from industry and 40-50 from the academia. Some of them were from the LUMS and बाकी सारे कुछ यहाँ से लोग थे, कुछ वहाँ से. उसमें होंडा के जो CEO लेवल के और सारे there was a blend of people over there. उन्होंने उसके different panels बनाए हुए थे. Now that panels were being moderated. The researchers were there, they were sitting, and the panel के सामने एक क्वेश्चन रखा जाता था कि अच्छा जी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर एग्जांपल इनकी फिजिबिलिटी पाकिस्तान में क्या हो सकती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसकी हम बात करें, या अगर वो पाकिस्तान में आएगी तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन के क्या इश्यूज हो सकते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर्स बिहेवियर, बैक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मिडस्ट्रीम सप्लाई चेन क्या इश्यूज हो सकते हैं. पैनल वाज पहले उन्होंने अपनी टेक दी, देन द रिसर्चर्स वर आस्किंग द क्वेश्चंस. There was 1 panel, 2 panel, 3 panel. सुबह से लेके शाम तक that exercise went on. और जब आप 5 बजे बाहर निकले हैं तो you had a lot of stuff on that battery electric vehicle. Then now you can find, and since I was personally part of that panel, so I could find a lot of things to ponder upon कि अच्छा इस पे रिसर्च करनी है, इस पे इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. So I got a lot of ideas कि अच्छा जी ये चीज़ें जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. तो वो जो बात है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो डायरेक्टली इंडस्ट्री के लोग उन्हीं की जुबानी या फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वी गॉट द आइडिया. वो अच्छे खासे लोग थे इंडस्ट्री के, वी गॉट दैट ओके दैट्स द. तो बड़े जो स्कूल हैं, इवन स्टैनफोर्ड कहें, वार्टन कहें, या पाकिस्तान में जो भी अच्छे रिसर्च में काम कर रहे हैं, they have that kind of sessions in order to trigger the research. वो ये तो एक डिपार्टमेंट ने किया, पॉसिबली सोशल साइंटिस्ट अलग कुछ कर रहे होंगे, जो बाकी हैं वो अलग कर रहे होंगे. सो दिस इज हाउ तो आपकी वो इंडस्ट्री या सोसाइटी ड्रिवन रिसर्च वो निकल के आती है. सो अच्छा, हैविंग द सेम इन वो अब मुझे जब मैं वहाँ पे गया तो आई थॉट दैट द सेम वी शुड हैव एट IoBM. वहाँ पे भी हम इसी तरह की कुछ एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वी कॉल द फार्मास्यूटिकल, और वहाँ पे डिस्कस करें उनके इश्यूज एंड देन वी कैन हैव. So the same thing could be done here, or at the broader level, it could be inter-university kind of thing. कि एक जो कॉन्फ्रेंस होती है, बल्कि अभी हमने ये सोचा है कि the conference which we'll be having this year in the fall, उसके अंदर एक पैनल इसी तरह का डेडिकेट कर दें, जिसके ऊपर बस जो लोग इंडस्ट्री से आए, दैट शुड बी, बजाय इसके कि कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो, वन टॉपिक उनकी टेक एंड देन द रिसर्चर्स उनसे सवाल पूछें कि अच्छा ये कौन सा एरिया. सो देन क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं. सो दिस विल हेल्प अस टू गेट टू नो दैट हाउ द इंडस्ट्री इज मूविंग. तो इस तरह करके आप इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च को एटलीस्ट वो ट्रिगर कर सकते हैं बाय टेकिंग द स्टेक होल्डर्स इनटू अकाउंट. कोई इसमें कोई चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज़ आप शेयर करना. अच्छा, अब नाउ ग्रेजुअली वी आर क्रीपिंग इनटू the writing part of the research, that कि इन तमाम, अच्छा होता पता है क्या है कि ये जब हम कर रहे होते हैं, जब वर्कशॉप स्टाइल में, तो सारी बातें करके अब कहते हैं हूँ दसो इन्हें लिखना किस तरह पेपर में, हाउ टू राइट दिस, बाकी गल्ला छड्डो, लीव द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो means that how to get the things published. So I am just now going to share with you that few of the tips कह लें, tricks कह लें, कुछ important चीज़ें which will help you to get your paper published, जो थोड़ी बहुत from my own experience and which I have learned from the other people and after we. अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि the most important component of your research paper is your introduction. इससे, and believe me that this is very serious. I have seen the papers being accepted on the basis of their introduction and being rejected on the basis of their introduction. क्योंकि और ये जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम अ स्टडी, आई शुड हैव रिटन ओवर हियर द रेफरेंस, दैट के जो 98%, अब हम प्योर, अब डूइंग रिसर्च को आप भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए, वरना अगर आप
वो डूइंग रिसर्च आपके माइंड में होगा तो फिर आप यू कैन कैच मी एट एवरी पॉइंट दैट कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो रिसर्च में। सो अभी हम नाउ ये टॉकिंग अबाउट आपने एक अच्छी रिसर्च कर ली, अब उस अच्छी रिसर्च को पब्लिश कैसे करना है। अच्छा जी, तो द पॉइंट इज दैट वो जो आपने अच्छी रिसर्च की है उसके अंदर आप ये भी ध्यान में रखें कि 98% ऑफ द पीपल दोज हु आर गोइंग टू रीड योर रिसर्च पेपर फॉर साइटिंग योर रिसर्च, मोस्ट लाइकली दे विल ओनली रीड द इंट्रोडक्शन, यू नो। तो इंट्रोडक्शन अगर गड़बड़ होगा तो वो फिर आपका पेपर वो जो भी होगा वो ऑब्वियसली दैट वुड बी डिस्कार्डेड, वो साइट पे हो जाएगा। और मैंने साइट का इसलिए यहाँ पे मेंशन किया कि जो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो इम्पैक्ट की बात आती है, जब वंस वी टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट, अब इसको छोड़ दें कि नॉर्मेटिव साइड हम इसकी नहीं देख रहे कि दैट इम्पैक्ट कुड बी यू नो दैट्स अ रियल इम्पैक्ट और नॉट, दैट्स ऑब्वियसली आई हैव माय ओन रिजर्वेशंस अबाउट इट। लेकिन अभी जो जिसको हम कहते हैं ना इम्पैक्ट फैक्टर रिसर्च, वो इम्पैक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ टाइम्स योर रिसर्च हैव बीन साइटेड। अब मेरी फॉर एग्जांपल अगर रिसर्च जो है वो साइट हुई है 50,000 टाइम्स, सो आई एम यू नो दैट आई एम इट वुड बी कॉल्ड कि ये बहुत बड़ा रिसर्चर है। अगर किसी की चंद 100 टाइम हुई है तो कहेंगे दिस इज नॉट अ बिग रिसर्चर, दैट इज द प्रॉक्सी। नाउ टू व्हाट एक्सटेंट दैट्स ट्रू, दैट्स यू नो लेट्स पुट असाइड, लेकिन अगर हमें उसी प्रॉक्सी पे काम करना है जो कि है ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, तो फिर आपको यू हैव टू टेक केयर that 98% of the people who are going to cite your paper, they'll only read the introduction. It means that the introduction of the research paper must be comprehensive enough that it can explain essential questions or essential scope of your Explain the entire story of the case. हाँ जी, अभी मैं बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में वो क्या क्या चीजें आप वो कर सकते हैं एग्जैक्टली। इट मस्ट हैव इट शुड बी वेरी क्विक, मोर देन यू नो। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि वो जब हमने ये मुमताज के साथ वो चीज़ें वंस वी स्टार्टेड राइटिंग, तो मेरी पहले भी ऐसे ही आदत थी कि मैं अपने जब मैं इंट्रोडक्शन लिखने लगा तो मैं इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल देता हूँ अपने वर्ड के ऊपर। और सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज व्हाट एंड हाउ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मैं रिसर्च पेपर लिखना चाह रहा हूँ, और हमेशा ये याद रखिएगा जब भी हम कोई स्टडी या कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं, एक उसका मेन एरिया होता है और दूसरा उसकी पैराफ्रीज या आप समझ लें कि एंसिलरी एरियाज हैं। सो द फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो दैट व्हाट इज मेन एरिया ऑफ योर रिसर्च। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक रिसर्च हम कर रहे हैं टैलेंट मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि पाकिस्तान, लाइक स्टोरी हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान दे आर डिक्रीजिंग। मैं अभी आपको उस बैकग्राउंड बता रहा हूँ, और इसकी वजह यह कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह लैक ऑफ इनोवेशन है इन द प्रोसेसेस एंड यू नो प्रोडक्ट्स। सो पॉसिबली द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको इंट्राप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, मींस गिविंग सम फंड्स एंड फ्रीडम टू द एम्प्लॉय टू हैव सम वेंचर एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप करें, और वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू दे कैन ब्रिंग सम इनोवेशन इन द प्रोसेस और इन द ऑर्गेनाइजेशन में वो लेके आ सकते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है। अब हम ये चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। टैलेंट मैनेजमेंट, रिटेनिंग द टैलेंट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट वे। तो अब क्या हुआ कि एक हमने रिसर्च कंडक्ट की दैट एज टू हाउ द टैलेंट मैनेजमेंट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस रिसर्च के अंदर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इज आवर मेन एरिया। सो इट मीन्स दैट जो यहां से जो व्हाट शुरू होगा दैट वुड बी योर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। What and how means that what corporate entrepreneurship is and how does it work, means that how does it fit into the context and why it's important. तो मैं अगर मुझे आप ये कहेंगे कि मैं इसका if I was supposed to write the introduction of, for example, talent management and corporate entrepreneurship, so I would have started from the corporate entrepreneurship, defining the corporate entrepreneurship, and then I have moved on to the second or third sentence that corporate entrepreneurship could be one of the solution. It can play a catalyst role, or it can help improve the productivity and innovation of the firms, or something like that. You know, giving a bit of the glimpse कि कैसे ये corporate entrepreneurship उसको वो कर सकते हैं, and then why it's important. Why it's important is then you have to explain that
why this working on the corporate entrepreneurship could be important. फिर वो आप उसके पीछे पूरा केस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि means that for example if you're working bringing corporate entrepreneurship in the organization, it can improve the productivity, it can improve their efficiency, and obviously this all would be, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँगा, this you have to bring from the literature. What and how ये है क्या, this you have to bring from the literature. Why it's important, you have to bring from the literature. What work has been done. तो corporate, अब फिर आगे सवाल ये पैदा होगा कि corporate entrepreneurship के एस्पेक्ट से क्या काम हो चुका है, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे ये भी, and then what has not been done, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे टैलेंट मैनेजमेंट को. तो आप ये कहेंगे कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेशन ये चीजें इसके थ्रू प्रमोट कैसे किया जा सकता है, ये काम हो सकता है. हाउएवर वन ऑफ द एस्पेक्ट व्हिच कुड बी इंपॉर्टेंट is talent management. Managing talent can, play instrumental role in promoting corporate entrepreneurship. It can help and this and that, whatever. Looking into the literature, we have not found, talent management, what role talent management can play in improving corporate entrepreneurship. There are, एक और भी बड़ा important चीज ये भी होती है कि हम अक्सर स्टडीज के अंदर रोल क्लैरिफाई नहीं होता. क्लैरिफाई कैसे नहीं होता, मतलब एक कुछ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि ये इसको इम्प्रूव करेगा, कुछ कह रहे हैं वो नहीं इम्प्रूव करेगा. तो आप ये भी, दिस इज आल्सो गैप इन द लिटरेचर दैट देयर इज अ कंफ्यूजन, देयर इज अ स्टेट ऑफ कमोशन अमंग रिसर्चर्स, देयर इज नो एनी एग्रीमेंट दैट के टैलेंट मैनेजमेंट कैसे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को कंट्रीब्यूट करेगी. सो देन यू कम विद द गैप, मींस व्हाट हैज नॉट बीन डन, और फिर आप बताएंगे कि अगर आप इस गैप को ब्रिज कर लेते हैं, if you will be able to bridge that gap, तो फिर इससे क्या, मतलब क्या contribution हो जाएगा, means that how, what the benefit, what addition you would be doing in term of research, तो आपका क्या addition होगा, how bridging the gap can be beneficial. So for example अगर मैं इसी की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि understanding the clarity on the impact of talent management on the corporate entrepreneurship can help the companies to adopt the talent management driven policies for promoting entrepreneurship. तो ये उसने वो beneficial एक वो कर दिया. और फिर आप then you bring in that against this all backdrop or against this context, the objective of this study is to explore or to examine or to investigate or whatever the relationship between this and that or whatever, just very conventional way. और फिर आखिर में आप बता देंगे कि doing so study ये इसके ये contribution होगा. तो अगर आप, मतलब मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ, दिस कुड बी वेरी क्रूड एग्जाम्पल, इसमें वो नहीं, बट मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ कि यूजुअली जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स होते हैं, दे टेंड टू सी दैट व्हाट इज योर टॉपिक, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हाउ डू यू परसीव दैट, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, हाउ मच वर्क हैज बीन डन. दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ योर रिसर्च विच यू हैव डन, आपने कितना पढ़ा है, आप वो सारी स्टडी साइट करेंगे, और फिर गैप, उस गैप को कैसे ब्रिज किया जा सकता है, योर स्टडीज ऑब्जेक्टिव एंड देन द कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन काफी हद तक स्ट्रक्चर हो जाता है. मींस दैट एसेंशियल एलिमेंट्स आर देयर इन द introduction of your paper. So this is the first thing that I think that अगर आप इसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, if you could write your introduction of your paper in this way, there are the many ways, but at least this is one of the way जिसमें जो journals उसको वो कर रहे होते हैं. So obviously this could be, this can help you to get your paper move on. Embedded is one of the journal which is doing in aspect. नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, एब्स्ट्रैक्ट तो पीछे चला गया. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर व्हिच कम्स आफ्टर पेपर के. मैंने यहाँ पे कहीं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च पेपर, डेलिबरेटली मैंने हटा दिए, उसमें डिस्कस नहीं किया. टाइटल है, फिर ऑथर्स आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर उसके कीवर्ड्स आगे, देन इंट्रोडक्शन. This is highlights the gaps and objectives. This is a kind of a concise summary. ये जो आपका केस इंट्रोडक्शन बना रहा होता है, लिटरेचर एंड ऑल दैट. सो these are. So I am talking about this introduction. ठीक है, इसमें कोई if this, ये साइंस नहीं है. दिस इज जस्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड काइंड ऑफ प्रैक्टिस. आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो ज्यादातर पेपर्स में इसी तरह से ये चीजें चल रही होती हैं. Then in the literature, again, most of us we do write, जो especially emerging researchers हैं, हम लोग
एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे होते हैं बिजनेस एंड सोशल साइंस में। तो ये याद रखिए कि अगर आप एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पेपर के 3 constituents essential हैं। Your research paper must have the 3 parts. First part is that is what the definitions and dimensions of your variables. For example, अगर मैं ये talent management and corporate entrepreneurship की बात कर रहा हूँ तो मुझे literature review के पहले इससे मैं इनको explain करना है कि ये हैं क्या, इनकी history क्या है, मैं इसको कैसे operationalize कर रहा हूँ, number 1. Number 2, you must have the theoretical exposition. क्योंकि आप post positive means that you are not creating any theory, you are just relying upon some other, किसी के ऊपर आप वो कर रहे हैं, किसी theory को आप test कर रहे हैं empirical research में। So obviously in that particular case आपको बताना है कि वो जो framework है आपका, अगर ये talent management और corporate entrepreneurship, ये किस theory के ऊपर base कर रहा है, ये मेरा idea नहीं है। I have to tell that this is being backed by, for example, human capital theory or resource-based theory and all that. So theories are usually a very comprehensive, kind of a vague, कि वो आपको उसमें देखना है कि वो it's obviously theory is a philosophy. तो आपने उसको philosophical understanding को वो किस तरह से आपके framework को theoretical bedrock provide कर रही है, that you have to explain. So that's number 2 an important thing, and the third is the hypothesis. So again I repeat, if you're writing an empirical paper, 3 उसके essential components हैं, आप किसी भी impact factor journal में देखें आपको नजर आएंगे। Number 1 is definition and dimensions of the variable, number 2 is the theoretical exposition, and number 3 is hypothesis development. ये तीनों तो ये logically flow करते हैं, मतलब पहले आपने variables को explain किया, फिर आपने उनके जो आपस में रिलेशनशिप है थ्योरीज की बेस पे उसको एक्सप्लेन किया, और फिर वो रिलेशनशिप को हाइपोथेसिस वाइज आपने ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर व्हाटएवर आपने उसको ड्रॉ किया, एंड देन यू आर राइटिंग योर हाइपोथेसिस एंड देन यू मूव ऑन टू द मेथडोलॉजी। अच्छा, ये दिस इज अबाउट एम्पिरिकल पेपर, जो जिसके अंदर आप प्राइमरी डेटा या जो भी आप वो कलेक्ट कर रहे होंगे। जो दूसरे क्वालिटेटिव पेपर होंगे उसमें फिर देयर कुड बी वो डिफरेंट वो हो सकती है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर कुछ सप्लाई चेन में हम कर रहे हैं और किसी हम वी टेकिंग द केस ऑफ 2 or 3 ऑर्गेनाइजेशंस, so sometime supply chain में we are not highly theoretically driven थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो सप्लाई जो ऑपरेशनल नेचर की है उनके पीछे थियरी नहीं होती, तो उसके अंदर यू डोंट नीड टू गो फॉर द थियरी। फॉर एग्जांपल सप्लाई सिलेक्शन क्राइटेरिया, आई वांट टू डेवलप द सप्लाई सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। सो इन दैट पर्टिकुलर केस there will be my what supply development criteria is, उसको मैं कैसे explain कर रहा हूँ, there are certain variables, could be a case highlight of the industry, और फिर उसको so that would be a bit different, उसको हो जाएगा। ठीक है जी। सो क्विकली मूविंग ऑन टू मेथडोलॉजी। अच्छा, लिटरेचर में एक जो इंपॉर्टेंट बात जो पहले मैंने की थी उसको आप कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, कि जो मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग लिटरेचर में सिर्फ जर्नल के आर्टिकल्स पढ़ते हैं। बिलीव मी दैट अगर आप अपने लिटरेचर को रिच कर लें, इफ यू रीड दिस मैकेंजी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या डिलॉयट की इनकी रिपोर्ट्स, और इसके थ्रू अपना लिटरेचर आप रिच कर लें, आपका इसको ऐड कर लें, तो योर आर्गुमेंट वुड बी मच स्ट्रॉन्गर, यू वुड हैव मोर इम्पैक्टफुल वट एवर यू वांट टू से, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज दैट आई ट्राई टू हैव मे बी 60% from the journal articles and rest of the 40% from the books, from the professional magazines like Harvard Business Review, like this international magazines, Times, Economist, World Economic World Reports, McKinsey। तो जब आप ये पढ़ेंगे, so then you know that these things, ये तो सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, this is being read by a very focused community, journal articles usually, लेकिन ये जो रेस्ट ऑफ द 4 है ना, ये बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दिस विल गिव यू द काइंड ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसकी क्या है, और ये जो स्पेशली आई हैव फाउंड दीज रिपोर्ट्स रियली बेनिफिशियल, जो कि ये मैकेंजी की अगर आप देखें या डिलॉयट की या जो दूसरी इस तरह की कंपनीज हैं, देयर KPMG वगैरह, दे आर कमिंग विद द कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स, they are really very well grounded, very detailed, and they can help you to understand whatever that context is. So again, from in the literature, please, if you really want to get your
work published in the good journal and it could be noticed. So आपको इसके ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो references हैं, you must have to refer to these also beside journal articles. And journal articles में there's one very important thing. Try to read the papers from the reputable journals. The reason is that a lot of journals, there are a lot of predatory journals, जिसमें एक बहुत पहले एक बेल्स लिस्ट आई थी, जेफरी बेल्स, उसके अंदर predatory journals थे, और वो journals ऐसे भी थे कि जिसके अंदर एक लोगों ने, उसने जेफरी बेल ने क्या किया कि एक फॉर्मूला बनाया H2O इज इक्वल टू फायर, और उसने वो पेपर भेज दिया केमिस्ट्री एक जर्नल, उन्होंने पब्लिश कर दिया उसने. अब यू कैन इमेजिन H2O इज इक्वल टू फायर, वो करके उसने मतलब इसी तरह की फेक चीजें उसने बना के इन ऑर्डर टू जस्ट उसको एक्सपोज करने के लिए जर्नल्स को, बिकॉज दे वर जस्ट टेकिंग द मनी एंड पब्लिशिंग, यू नो. अभी भी बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो कि इम्पैक्ट फैक्टर है, दे आर गेटिंग द मनी, दे आर पब्लिशिंग, यू नो, एवरीथिंग रबिश जो भी है वो सारी चीजें उसके अंदर पब्लिश कर रहे होते हैं. प्लीज डू नॉट रीड दोज काइंड ऑफ जर्नल्स, वो आपकी नॉलेज कॉन्सेप्ट भी खराब करेंगे और वो आपके अंडरस्टैंडिंग को भी वो करेंगे. सो दैट्स व्हाई फॉर मी जो मैंने इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है, एक तो ये कि गो फॉर द रेप्यूटेबल पब्लिशर्स लाइक एमरल्ड, टेलर एंड फ्रांसिस, एल्सेवियर, सेज, विले, इनके जर्नल्स जो है दे आर, यू नो, दे आर रेप्यूटेबल जर्नल्स, एंड उन्हीं के ही जर्नल्स को आप साइट करें. अभी इन द बिजनेस स्कूल्स, यू नो, इम्पैक्ट फैक्टर इज नो मोर इंटरनेशनली. अब वो देख रहे हैं ABDC and then ABS, and beside that there's a FT50, and you know, so now there are a lot of journal in the impact factor. So impact factor के अंदर भी अब एक कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज बन गई है. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल लिस्ट है, दैट्स दे हैव वेरी स्पेसिफिक जर्नल्स. जो ABS वाले हैं, अगेन दे हैव मोर स्पेसिफिक नैरो list of journals, and then there's FT50, only 50 top 50 journals of the world. So अब क्या हो रहा है with the, for example, if you are applying in Stanford or Wharton, वो सिंपली आपको ये कहेंगे कि तीन आपके जो 3 पेपर्स फ्रॉम द FT50 वो हमें भेज दें. So if it means that if you have the 3 papers in the FT50, that's fine. If you don't have, you will not send. Likewise, there are a lot of universities in China, the big universities, they are asking for A star and those kind of. तो वहाँ पे पेपर आप उसी वक्त पब्लिश कर पाएंगे जो कि once you are reading those papers and they are really impactful papers, तो फिर ही आप, तो आपने लिटरेचर में try to have those kind of papers while writing. अच्छा जी, then methodology, quickly मैं इसको बस wind up करूँगा. Method में my only concern is द डेटा. हमारी देखें रिसर्च के अंदर जो हार्डकोर साइंस है वो क्या कर रहे होते हैं, वो तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. हमारी सोशल साइंटिस्ट की रिसर्च में क्या एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं? हमारी रिसर्च के अंदर रिसर्च इज ओनली अबाउट डेटा. Data is something which in fact you know, it is exactly what we call it research. मतलब हम डेटा को जो रिजल्ट्स आते हैं, बाकी सारी चीजें तो क्या है कि लिटरेचर, वी जस्ट रिव्यूइंग द लिटरेचर, मेकिंग द केस. In fact, the real research is getting the data and analyzing the data. प्रोसेस जो असल में रिसर्च का वो यही है. और अगर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, इट मीन दैट आपने पूरा जो इनफैक्ट जो एसेंस ऑफ रिसर्च था उसी को आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया. सो दैट्स व्हाई द डेटा again, you are, you know, in the early stages of your research, please make it your habit that you get the few number of data, but that should be correct. आप चाहे 10 कंपनीज ले लें, अगर आपको कोई फेल करता है तो फेल कर दे, there is nothing above the integrity. ठीक है, आप उन्हें टीचर कहें ठीक है आप फेल करते हैं तो कर दें, लेकिन I couldn't manage to get more than 10. I don't know that how the other people can get 100. तो जब इंटेग्रिटी प्रमोट होगी तो ऑटोमेटिकली टीचर को भी पता चलेगा यार कि हाँ ऐसे ही है. इट्स नॉट के 100 ऑब्जर्वेशन कहाँ से 100 कंपनीज का डेटा लेके आएंगे. सो अगर बिलीव मी दैट दिस इज द वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से जो हम पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन जो है पूरी दुनिया में बदनाम है. आप थोड़ा सा अगर आप जाके देखिए, क्योंकि वी आर ऑलवेज गेटिंग द फेक डेटा. मतलब पहले तो ये होता था कि वो पेपर कैफेटेरिया में फिल करवा लेते थे, अब तो वो भी नहीं करते. अब तो बल्कि अब तो डेटा की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते हैं. राइटिंग रिजल्ट बीटा 0.5 पी इतनी, ये फलाना, पर डेटा तो छोड़ दें, डेटा लाने की जरूरत ही नहीं.
सो दैट इज व्हाट, सो रिसर्च तो खत्म होगी ना उसमें से जो आपकी असल जो एसेंस था। सो प्लीज डेटा इज समथिंग, और मैं आपको बता दूं कि आप जो भी किसी का जो भी मजहब हो, जो डिवाइन रिलीजन है, आप एक हर बंदे ने मरना है और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस दुनिया के हर मजहब में है। सो वंस यू विल डाई, दिस इज अ बिग सिन। आप डेटा लेके उसको मैनिपुलेट करके जो रिजल्ट्स है वो आप कर रहे हैं और पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। और कितना बड़ा गुनाह है कि जब आप वंस यू इवन आपके मरने के बाद भी लोग रिसर्च पेपर पढ़ते रहेंगे और वो गुमराह होते रहेंगे, यू नो दैट यू आर जस्ट, so that's why please just avoid this data fudging, you know that this is the, अगर आपने data fudging को avoid कर लिया, if you're getting the true data, तो आपके बहुत सारी रिसर्च की जो वो इम्पैक्ट है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर रिपोर्टिंग द ट्रू डेटा इनफैक्ट कैन हैव अ लॉट ऑफ गुड कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, फिर नाउ दिस वो क्या कहते हैं बैंड वैगन, कि एवरीबडी इज गोइंग फॉर द PLS SCM और इसमें सेकेंडरी में ARDL और फलाना इस तरह की methodologies, whereas you know now the world has moved beyond these kind of methodologies. एक बात जो कि important है to just share with you that now the world is moving toward the machine learning. ठीक है, machine learning softwares, advanced analytics, they are more intelligent, you know they are more comprehensive and they can, you know, data के through आप उसको train कर सकते हैं and the results are more accurate, and the problem of that data, fake data, वो भी उसको भी overcome कर सकते हैं। ठीक है, so I would suggest you that maybe you can make it a part of your New Year's resolution that कि machine learning को कुछ ना कुछ आप लाजमी इसका सीखें, मतलब this machine learning would really help you, that's the future, you know, in fact क्योंकि these all methods are going, and I think that machine learning could be something which can bring the researchers, academia and industry together, क्योंकि उसके मशीन लर्निंग की बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री अब उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द एवेन्यू दैट कैन हेल्प अस टू, यू नो, ब्रिंग क्लोजर टू द इंडस्ट्री। जी, it's not expensive, yeah, machine learning इसके जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है एंड कोर्सेज भी फ्रीली अवेलेबल हैं। Machine learning, there, for example, Venzim is one of the machine learning software. Venzim 2 is the one, Venzim old एक version था उसका। तो simply what the machine learning algorithms are doing, they are based on the artificial intelligence. You know, the ability to self train। बाकी वैसे जो हमारे पास ये भी सॉफ्टवेयर है to some extent, ये भी AI के उसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, लेकिन जो ML के सॉफ्टवेयर हैं उनकी एबिलिटी क्या है कि जब आप उनको एक्चुअल डेटा, फॉर एग्जांपल मैंने मशीन लर्निंग के एक सॉफ्टवेयर को यूज करके डिमांड फोरकास्ट की और फिर बाद में एक्चुअल डिमांड जब आई तो मैंने उसको डेटा दिया एंड देन आई ट्राई टू टेल द सॉफ्टवेयर कि तुमने ये फोरकास्ट किया था एंड दिस वाज एक्चुअल फोरकास्ट, दिस वाज द डिफरेंस। वो फिर उसको रिकंसाइल करेगा बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा एंड देन विल लर्न, एंड मे बी जो नेक्स्ट टाइम आपकी फोरकास्टिंग होगी दैट वुड बी मोर एक्यूरेट। सो दिस इज समहाउ टोटली, यू नो, यू कैन इसको आप कर सकते हैं। तो मशीन, सो इसके देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर, आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट आल्सो एक्सपर्ट ऑफ दिस मशीन लर्निंग। आई हैव आल्सो वन ऑफ माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन के मैं भी इसको आई विल ट्राई टू लर्न दिस मोर बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज a kind of a future, not only in the research but also in the business। तो दूसरा, सेकेंडली मैं आई जस्ट wanted to show you that video, लेकिन मैं वो लिंक पता नहीं राना साहब वो दिखाई, डॉक्टर आलिया क्रम की वीडियो। हाँ जी, that was in fact that's a wonderful video, you know, मैं आप उसको देखिएगा, मैं लिंक मैंने इसमें रख दी है। that you know okay, it's not always, methodology is not important, the important is that the way you place the methodology, that simply that lady employed very simple independent sample t-test in order to see that how, you know, the various behaviors of the people differ, and then they come up with the, you know, remarkable groundbreaking outputs, so that she has explained in that particular video, you can watch that। अच्छा जी, तो लास्ट बट ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट, इंडस्ट्री के लोग जहाँ पे जिसमें
आई नो दैट आपका वो कर्व, मेरा भी कर्व वैसे ओवर हो चुका है, बट आई एम जस्ट, मैं ये चाह रहा हूँ कि ब्रेक के बाद मुझे भी ना आना पड़े एंड देन फिनिश के इम्प्लीकेशंस इंडस्ट्री के लोग जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं आपकी रिसर्च के, दैट इज द इम्प्लीकेशन पार्ट। वो कहते हैं सो व्हाट, आप इंडस्ट्री के पास ले जाए, मैंने जनाब इम्पैक्ट ऑफ फलां का फलां ये इसको कर लिया, देन दे लास्ट दैट ओके सो व्हाट इज द टेक अवे फॉर अस। So that part must be very substantiated and it must be, well grounded in your findings, that what is the takeaway for your research, and it can really help you to come closer to to the industry, and this is one of the essential component। जब जो अच्छे जर्नल्स होते हैं वो ये भी देखते हैं कि इसने पूरा प्रोसेस किया, व्हाट इज द टेक अवे ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च, जो कि इम्प्लीकेशंस की बात होती है। देयर आर फ्यू ऑफ द अदर थिंग्स जिसमें ऑब्वियसली मैंने क्या, हाउ डू आई एम लर्निंग इन टर्म ऑफ रिसर्च, कि आप में रिसर्च टीम के अंदर आप कोशिश ये होनी चाहिए कि आप या तो सबसे जूनियर हो या यू शुड बी इन द मिडल, यू शुड नॉट बी लीडिंग द टीम। इफ यू आर लीडिंग द टीम योर लर्निंग कर्व इज ऑलरेडी फ्लैट, क्योंकि सो दैट्स व्हाई। और अगर आप लोग इवन यू कैन डू दैट, यू कैन राइट टू द रिसर्चर्स जो कि इंटरनेशनल रिसर्चर हैं, आप उनको लिख के उनके साथ, एंड दे पीपल रिस्पॉन्ड, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, एंड यू कैन ड्यूरिंग दैट वर्क यू कैन लर्न फ्रॉम देम। तो ऑलवेज ट्राई टू वर्क इन द टीम एंड बी द जूनियर मेंबर ऑफ द टीम इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग, दैट्स समथिंग। ऑब्वियसली हमारे यहाँ एक वो रेस लगी हुई है क्वांटिटी की, बट पूरी दुनिया में नाउ द वर्ल्ड इज प्रेफरिंग द क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशंस। मेरे प्रोफेसर राजा रसिया, ही हैज कम ओवर हियर इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, आप लोग शायद उनसे मिल भी चुके हैं। सो ही हैज बीन द प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मैनी प्लेसेस। अगर आप उसके नंबर ऑफ रिसर्च पेपर देखेंगे जो कि उसने 65 ईयर्स में प्रोड्यूस किए हैं, अपने ये 45 है जो भी उसका एक्सपीरियंस था, तो दे आर लेस देन मे बी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक एवरेज जो अच्छा रिसर्चर है उससे कम होंगे। लेकिन मलेशिया के अंदर जब भी आप रिसर्च की बात करेंगे उसका नाम घूम घूम के सामने आ रहा होगा। So that's why he's among the top जो 7 distinguished professors उनके all time मलेशिया के उसमें appear होते। The reason is that the focus should be more on the quality rather than the quantity। जो abandon the bad। एक आखिर में मैं सिर्फ ये, अच्छा ये भी that's very, ये मैंने अभी खुद से भी शुरू किया है कि देखें हमारी रिसर्च आर्टिकल में रह जानी है। In how to tell to the industry, that's important। हमने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की, इंडस्ट्री के लोगों को नहीं पता चलेगा, बट इंडस्ट्री पीपल्स डू रीड न्यूज़पेपर, दे डू रीड फीचर आर्टिकल। आजकल तो अभी वीलॉग भी आ गए हैं, तो इसलिए अगर आप जो रिसर्च कर रहे हैं, हमें आई थिंक दैट वी हैव टू ब्रिंग इन दिस, ऑलरेडी पीपल हैव ब्रॉट इन दिस सोशल मीडिया। आपने एक रिसर्च पेपर लिखा, उसका एक क्विक लेमैन नोट बनाएं, यूट्यूब ऑन करें या उसको वीडियो एक करने के बाद आप उसको चढ़ा दें। सो दिस इज हाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज डूइंग द सेम थिंग। यू कैन पुट इन अ सिंपल वे, न्यूज़पेपर में उसको भेज दें। इवन हमने एक रिसर्च की थी ऑन द स्टील इंडस्ट्री, और मैंने वो भेजा बिजनेस रिकॉर्डर में, देयर वर 2 आर्टिकल्स, और बिजनेस रिकॉर्डर में वो पब्लिश हुए, एंड देन आई वाज कॉन्टेक्टेड बाय सम ऑफ द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री फॉर अ काइंड ऑफ, वो सिर्फ उस आर्टिकल की बेसिस पे एक it was a quite a humongous kind of consultancy project। वो जो रिसर्च थी हमने करके उसमें वो पब्लिश होगी, उन्होंने पढ़ लिया आर्टिकल, और आखिर तक मुझे वो यही समझते रहे कि मैं कोई मैंने मेटलर्जी में किया हुआ है एंड आई एम इंजीनियर एंड ऑल दैट। वो तो उनको बाद में पता चला ही तो मुझे भी नहीं पता था कि वो मुझे ये समझ रहे हैं। देन लेटर ऑन आई टोल्ड देम कि आई एम नॉट द इंजीनियर, दैट वाज रिलेटेड टू द स्टील इंडस्ट्री। एंड सो मतलब ये दैट कुड बी वन ऑफ द वे। अच्छा, दे आर सम ऑफ द टेस्टेड रूल्स जो कि मैं सोशल मीडिया पे तो नहीं बता सकता, लेकिन ये भी कुछ ऐसे रूल्स हैं